मो नाम अछि अमित मिश्रा और मो एम्स भुवनेश्वर में एमबीबीएस करते हैं। आज आप कंटिन्यू करबा एग्जाम्पलर रो 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्लास 11th रो बायोलॉजी एग्जाम्पलर आउ हमें अधा देख देथलो ई चैप्टर रो प्रीवियस सेशन रे हमें मैम एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर और अधा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर देथलो। एबे हमें कंटिन्यू करबा। चलो स्टार्ट करबे क्वेश्चन नंबर 9 रो व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड फ्रेंड ऑफ द फार्मर माने अर्थवर्म को हमें कृषि रो मित्र कहीं कहूँ गोटे फार्मर को अर्थवर्म रू कौन बेनिफिट मिलुची सेटा होची मेन तमरो क्वेश्चन जोड़ा पचारची। ओके तो यार जो रीजन अच्छी अर्थवर्म कौन खाए माटी खाए तो जो माटी से खाइबो खाई 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 भितर जीव तो माटी भितर कौन करिवो बहुत होल बरो पोर जो है ना सेटा बनेबो तो सेठे कौन रहइबो एयर तो प्लांट रो रूट को ब्रीथ करिवार इजी रहतो हला। अर्थवर्म क्रिएट्स पोर्स एंड रूट्स कैन ब्रीथ प्रॉपर। तमे देखिथिबो कि माने तमर जो गार्डनर वाले थाते से माने माटी खोलंती तमरो जो फूल गछ पत्र थाए तार पाका पाकी माटी खोलबे काई काई ना सॉइल भीतर एयर जिबा दरकार ताकि रूट रा सेल ब्रीथ करि परिबे निश्वास नहीं परिबे जदि तांको ऑक्सीजन जीवनी तले से माने भी मरिस गए तो सेति पई एडा इंपोर्टेंट कि तमरो अर्थवर्म सॉइल रे पोर क्रिएट करूची से पोर्स क्रिएट करिया पई से रूट्स को ब्रीथ करिया पई हेल्प करूची। आउ गोटे रीजन अछि कि जो अर्थवर्म रो एक्सक्रीटा सेटा होची बहुत भलो खाद्य गुड मैन्योर तो जो मैन्योर तमे पकोच फर्टिलाइजर मैन्योर ता जगह जे तमे अर्थवर्म पालिबो तार एक्सक्रीटा बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस फॉर द प्लांट आउ इट इज कंसीडर वेरी गुड तमे वर्मी कंपोस्ट जानि थिबो सेठरे तमे अर्थवर्म मानको पाली की वेस्ट मटेरियल रु तांकर एक्सक्रीटा बाहर करिकी से एक्सक्रीटा कलेक्ट करिकी तमे मैन्योर बना वर्मी कंपोस्ट तो सेटा होची तमरो अर्थवर्म रो एडवांटेज। चल हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थ 10th क्वेश्चन। तो जदि हमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस का डायग्राम बना सेम प्रिंसिपल में वेंट्रल सरफेस पे बनेबा एडा होची डॉर्सल एडा होची वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस से तमे देखियो कि चलो डॉर्सल सरफेस से तुमको मझिरे गोटे डॉर्सल वेसल था सेडा दोसिबो नो पोर्स किंतु वेंट्रल सरफेस रे तुमको जेनाइटल पोर दोसिबो हैला 14 सेगमेंट रे गोटे फीमेल जेनाइटल पोर दोसिबो तापर तुमको मेल जेनाइटल पोर्स दोसिबो तो वेंट्रल सरफेस रे जेनाइटल पोर्स तमे देखि पारिबो। नेक्स्ट तो एटा थिला तमरा अर्थवर्म रो एटा को तमे देखि नोट करि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को छी करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट होची तमरा इन अर्थवर्म a single male genital pore is present which is false. It may help in locomotion of earthworm, it is true. Muscular layer in the body of earthworm is made up of only circular muscle. Again, it is false. Typhlosoal is part of intestine of the earthworm. True. So, typhlosoal तमे जानछो कि increases the surface area and it is a part of intestine. Next, 12th question. Why nephridia and earthworm that are basically similar in structure classified into 3 types? Mention names of each. Nephridia. मो 12th क्वेश्चन इट सॉल्व करछि। नेफ्रिडिया कोन बेसिकली जदि तमर गोटे बॉडी कैविटी अछि हां से बॉडी कैविटी रे तमर बहुत वेस्ट एक्युमुलेट हे जाय छि ताले नेफ्रिडिया गोटे सॉरी मोल्टा बने देली नेफ्रिडिया से वेस्ट को से बॉडी कैविटी रो नै करी तमर इंटेस्टाइन रे नहले आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दो। आइदर नेफ्रिडिया वेस्ट को नै करी इंटेस्टाइन रिलीज कर दो नहले आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दो। एबे अर्थवर्म रे तीनटा टाइप ऑफ नेफ्रिडिया अछि पेरिंजियल सेप्टल इंटेगुमेंटरी हैला। हाउ आर दे क्लासिफाइड तीनटा टाइप काई अछि ड्यू टू डिफरेंट साइट और लोकेशन।
এটা হচ্ছে তোমার ভিসা। नेक्स्ट तमरो नेम फेरिंजियल सेप्टल इंटेग्यूमेंटल। तो जदि तमरो अर्थवर्म तो अर्थवर्म रो अराउंड 3/4 सेगमेंट पाखरे तार फेरिंग्स थाए। सेई फेरिंग्स पाखरे फेरिंजियल नेप्टिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया सेप्टारे थाए। दीटा सेगमेंट भीतर जो सेप्टा अछि ता भीतर जो दे ओपन इनटू इंटेस्टाइन। फेरिंजियल आउटसाइड इंटेग्यूमेंट्री on the body surface of the earthworm and the open outside। ହେଲା ତ ନେଫ୍ରିଡିଆ ଏଟା ତମର ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟ। Common name of some animals are given in column A. Write their scientific name in column B. Tiger, sorry, तो साइंटिफिक नेम जब भी तुम्हें लिखिबो तो यू हैव टू अंडरलाइन। जीनस रो ना, स्पीशीज, जीनस रो ना रे फर्स्ट लेटर कैपिटल रहइबो, स्पीशीज रो ना रे फर्स्ट लेटर स्मॉल रहइबो। दिटा को तमे सेपरेटली अंडरलाइन करबो, मिसे की अंडरलाइन करबो, सेपरेट अंडरलाइन करबो। ए सब रूल्स तुमको फॉलो करबो। नेक्स्ट पीकॉक। पीकॉक को कोनती पाबो स्पीशीज रो ना। तो जो तमे खाली स्पीशीज रो ना लिखतो ताले तुमको टूल फॉलो करे दरकार नहीं। आओ नेक्स्ट हो तुम्हारा हाउस फ्लैग। डिप्टेरा, डिप्टेरा फैमिली रहता मस्का डोमेस्टिका। ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତମର। ତ ତମର ଯୋଉ ପିକକ୍ ର ଆମର इंडियन पिकॉक ର ନା ହଉଛି ପାଭୋ क्रिस्टाकस। ହେଲା नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन कॉकरोच ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज परफॉर्म्ड बाय gizzard। malphizian tubules help in the removal of nitrogenous waste। hind gut of cockroach is differentiated into colon and rectum। In cockroach, the blood vessel open into spaces called hemocyte। Hello. Mention the special features of eye in cockroach। eye माने आखि। cockroach ର ଆଖିରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର କଣ? ଦେଖ ଆମର ଯେମିତି ଆଖି ଦିଟା ଆଖି ଅଛି cockroach ପାଖରେ ଏମିତି distinct। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ହଁ ତମେ ଆକୁ ଦେଖୁଛ କି ଦିଟା आई यूनिट ता पाखरे भी अछि, किंतु हमर आई आखिरे दिटा को आखिरे सिंगल इमेज फॉर्म हैला। गोटे रेटिना अछि गोटे आखिरे, ता ऊपर गोटे इमेज फॉर्म। कॉकरोच रो जो आखि सेटा गोटे आखि नो, ता भितरे पाखापाखि 1000 रो ऊपर छोट छोट आखि अछि, ताको मिसे की से गोटे आखि बनछि हैला। तो ताको हमें सिंपल आई नहीं, दैट इज अ कंपाउंड आई। मोर देन वन यूनिट्स हैला, यूजुअली इन थाउजेंड्स से कौन है तमर गोटे थर रे 1000 टा पिक्चर बनियो। हमर जेंते हम भाव तुम गोटे गछ को देखो, तुमको गोटे गछ दुसछि, कॉकरोच को पाखापाखि 1000 टा गछ दुसियो काହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ 1000 ଟା यूनिट ଅଛି ହେଲା। 1000 ଟା ଅଛି ତା ପାଖରେ, ତାକୁ 1000 ଟା ଗଛ ଦୁସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ କଣ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରିବ ନା। ତମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦିଶିବ, କକ୍ରୋଚ କୁ କଣ ଦିଶିବ?
हजार हजार गछ ताको दुसियो सब जाक ब्लेंड हो जाइथिबो निज निज भितर एटा प्रोविजन को कहते मोजाइक मिश्रण हमर आखि केमती कॉकरोच आखि केमती छोट 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 आखि बहुत आखि इन सिंगल सिंगल आई है मोजाइक विजन रो एडवांटेज मोजाइक विजन रो एडवांटेज कोन लेस रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन कम अछि तमे अभी तक कोन गछ देखि पारे किंतु यार तम सिंगल आई रो रेजोल्यूशन बेटर तम गोटे गछरा फीचर्स देखि पारिबो ता भीतर केटा पत्र अछि गଣି पारिबो हैला किंतु मोजाइक विजन हैज लेस रेजोल्यूशन बट मोर सेंसिटिव एबे जदि तमे ए गछ को हठात गछ को हटै दिया पिक्चर्स ताहाले तमरो हमको कोन दोसिबो गुटे गछ थिला परा कॉकरोच रो आखिरे कोन दोसिबो ताको कोन फील गुटे नै हजारटा गछ थिला हठात सब जाको पळेला गुटे गछ हटे किंतु ताको हजारटा गछ से पिक्चर बनै छी तो जिन तमे से गुटे गछ हटेला तार माइंड रे हजारटा गछ उठी गला पूरा वाइट होला तो केते सेंसिटिव तारो ब्रेन कि तमे किछि भी इफेक्ट दो इट इज being multiplied by 1000 है ना 1000 times इफेक्ट था मल्टीप्लाई हो बुझिला तो कॉकरोच को टाइप एनिमल नॉकटर्नल एनिमल सो इट इज suitable for a nocturnal animal बुझिला कॉकरोच इज अ नॉकटर्नल एनिमल ताको राती रे आउ तमे किचन रे लाइट बंद करी पळल कॉकरोच आसिला खाइबा खोल सेट हठात किचन रो लाइट टा ऑन ହେଇଗଲା कॉकरोच रो आखि दे एते सेंसिटिविटी अछि से पूरा सेंस कर दबो कि केते जल्दी माने तारो बॉडी बहुत सेंसिटिव लाइट को नेकी टिके भी जदी लाइट टा को दुसियो से पूरा अलर्ट है हैला भाबो तमे गोटे छोट टॉर्च लाइट नहीं आसलो तथापि ताको जଣା पड़ कि तमे आसछ एते सेंसिटिव तार सेतपै से नॉकटर्नल ताको जानी देखो खाली कॉकरोच आमर जेंति आई होची गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट सेंस ऑर्गन माने आखि नथिले तमे बहुत जिंस करि परिबो तमे हाँ ठीक अछि लोक माने कंपनसेट कर दियंती किंतु तमर आखि नथिले बहुत मेजर मेजर फंक्शन तमे मिस आउट कर दो किंतु कॉकरोच रो बॉडी रे आखि रहते बेसी रोल जाए कॉकरोच रो आखि से करते रिलेशन ता पाखरे ताठ भी पावरफुल सेंस ऑर्गन्स अछन एंटीना अछि ता पाखरे केमिकल डिटेक्ट कर देवा जो साउंड सेंसर्स ता पाखरे अछंती बुझी परछो तो तारो आखि रो तारो जो आई यूनिट तारो काम खाली एतिकी लाइट रो वेरिएबिलिटी को ताको जाना पड़ियार अछि कि लाइट याड साडे जदी होची ताल ताको जाना पड़ियार अछि कि लाइट याड साडे टिके भी चेंज हेची सेति पई तार रेजोल्यूशन काम करी कि सेंसिटिविटी बेसी अछि हला सेडा होची तार आई रो फीचर्स Fog is a poikilotherm exhibits camouflage undergoes estivation and hibernation. How are all these beneficial to you? देखो poikilotherm camouflage estivation hibernation चारटा कर आउटल करता मु गुटे तार सबको बुझे दोची ता मीनिंग poikilotherm माने cold blooded camouflage माने hiding with surroundings
our estimation माने summer sleep, hibernation माने winter sleep. Okay. Poikilotherm, camouflage, estivation, and hibernation is beneficial to it. Poikilotherm. किसी apparent benefit नहीं, खाली blood, तारो जो body temperature, it depends on the surrounding. या तो छड़ गया किसी कौन poikilotherm मैंने cold blood ले ले advantage कौन less energy used up less energy used up to regulate body temperature. Camouflage protection. Camouflage कले कौन है वो ये तो खाया को दिया है तन से बची करियो protection from predator. Summer sleep, less water and food, therefore increase chance of survival. माने जदि से summer रे सोई पड़िबो एस्टिएशन करबो ताले ताको जो खाया पीबा न मिले खाया पीबा मिलेबन ताले मर जीवो पैसे सोई पड़े जेतले आइडियल कंडीशन आसे पुणी और सेम इज देयर इन विंटर्स less water and food hibernate कले increase the chances of survival. Right functions in brief. Nictitating membrane. Cockroach, frog ro आखिरे था nictitating membrane. Function is to protect and hydrate eyes. Tympanum. Function होची hearing. Copulatory pad. Function होची helps during mating and identification. Write appropriate types of tissues in column B according to the functions mentioned in column A. Secretion and absorption. What type of tissue kariba secretion and absorption? Columnar glandular epithelium. Protective covering. Stratified epithelium. Linking and supporting framework. Connective tissue. Using appropriate example, differentiate between false and true body segmentation. So, moya like 19. False segmentation record. No similarity between any segment. All segments have similarity. All segmentation rate, no repetitions of any organ. At least some organs have repetitions in each segment. True segmentation माने कौन कि तमरो सब जगह segment रे किछ ना किछ organ जाको repeat होची present होची. For example, circulatory system तमरो सब जगह segment रे रहइबो. Respiratory system रो organ किछ ना किछ सब जगह system रे segment रे रहइबो. हैला तमरो lymphatic system सब जगह organ रहइबो. Reproductive system रो किछ सब जगह
सेगमेंट रहइबो किंतु पल्स रे कोन होची तमरो जो जो सेगमेंट जाको सेडा ट्रूली डिवाइडेड ताक भीतर सेप्टा नहीं अच्छा हाँ आउटे अछि फॉल्स सेगमेंटेशन रे इंटरनल सेप्टा एब्सेंट ट्रू सेगमेंटेशन रे इंटरनल सेप्टा एब्सेंट हला तो बेटा हमर 19 what is special about tissue present in the heart basically का विषय କଥା होछि cardiac muscle what is special about cardiac muscle special points striated हला like skeletal muscles involuntary like smooth muscles तापरे एटा होछि branched unlike both smooth और skeletal muscle दिटा को ब्रांच करता है किंतु एटा ब्रांच contain intercalated discs can't get fatigued माने never stop functioning फैटिक हेगले कोन हबो फैटिक माने थकान हेगले तमर मसल राइज हो तमे तरा बेसी दौड़ तमको क्रैम्प आस जाए ए सब जिंस होए ए सब कार्डियक मसल रे होएनी ए सब तार स्पेशल फीचर्स हैला तार स्ट्रक्चर जदि तमे देखिबो हां वन मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड तो ये जो मझिर मु बनै छी एटा होची इंटरकैलिएटेड डिस्क एटा होची ब्रांच्ड फाइबर्स न्यूक्लियस तो एटा होची तमर कार्डियक मसल सेल्स हार्ट रो टिश्यू चलो लॉन्ग आंसर को जिबा classify and describe epithelial tissue on basis of structural modification on cell so epithelial tissue structural modification of cell simple epithelium पे first तब आश्रय simple squamous flat cells है ना simple cuboidal tube like cells simple columnar all slender cells अंकर न्यूक्लियस बेस पाखरे थाए columnar रो cuboidal रो न्यूक्लियस एकदम सेंटर रे रहबा और squamous रो तो न्यूक्लियस ही पूरा स्पेस ऑक्युपाई करबो एबे तमर जो cuboidal और columnar ना ता भीतर आउ दीटा आसबा हैना cuboidal ciliated columnar cuboidal columnar brush border तो मु गोटे गोटे बने के देखि दछि जदि सिलिएटेड अछि तले सेल ऊपर अछि तमरा सेलिया
ब्रश बॉर्डर अच्छी तुम्हारे सेल ऊपर अच्छी माइक्रोवेव है तुम जान ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कोड सेटा डेफिनेटली तुम इंटेस्टाइन रे मिलिबो आउ तुमर गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन जगह मिले सिलिएटेड एपिथेलियम तुमको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे मिलिबो एटा थला तुमर सिंपल तापर आसीबो स्ट्रैटिफाइड again stratified squamous stratified columnar stratified squamous रो दीटा पार्ट अच्छी नॉन केराटिनाइज जोटा कि तुमर बकल कैविटी वेजाइना ए सब जगह मिलिबो आउ केराटिनाइज जोटा कि तुमर स्किन रे मिलिबो स्ट्रैटिफाइड सिंपल और लास्ट तुमरा ट्रांजिशनल स्ट्रेचेबल एपिथेलियम फाउंड इन renal pelvis bladder urethra ureters जो जो जिनसे स्ट्रेच हुए सेठी तुमको एटा मिलेगा हला नेक्स्ट एगला तुम्हारा epithelial cells write down the common features of connective tissue on the basis of structure and function differentiate bones and cartilage connective tissue का common feature लेके आ रहा connective tissue का common feature होची पे matrix रहबो plus cells plus मोटे matrix plus cells रहबो matrix fibers leucopolysaccharides cells will be for example fibroblast mast cells plasma cells special cells है तापर connective tissue nets and joints various parts hands packings material stores various substance like fats etc secrete various regulators provide structural stability अब एटा होची तमार कनेक्टिव टिश्यू रो जनरल फीचर्स तापर से कहछि डिफरेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज ठीक अछि बोन्स और कार्टिलेज
ऑर्गेनिक पार्ट बोन रे कौन स्टेन इनऑर्गेनिक पार्ट मेजरली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सिमिलरली तुम कार्टिलेज रो ऑर्गेनिक कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट पाउ इनऑर्गेनिक एते बेसी ना तो बोन रे तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट इक्वल किंतु कार्टिलेज रे ऑर्गेनिक मैटर मोर देन इनऑर्गेनिक बोन रो स्ट्रक्चर होची हार्ड कार्टिलेज होची टिके सॉफ्ट हार्ड मैट्रिक्स सॉफ्ट मैट्रिक्स बोन इज नॉन प्लायेबल हम तमे ताको बेंड करि परिबोनी बट कार्टिलेज इज प्लायेबल तमे ताको बेंड करि परिबो नेक्स्ट बोन रे जदि गुटे लैक्यूना अछि सेट्रे गुटे ही ऑस्टियोसाइट रहइबो वन ऑस्टियोसाइट इन वन लैक्यूना लैक्यूना माने स्पेस किंतु जदि तमरो कार्टिलेज अछि गुटे लैक्यूना रे 2 to 4 chondrocytes in one lacuna. Bone has rich blood supply. Cartilage has poor blood supply. Bone can be formed by cartilage, but cartilage cannot be formed by bones. Bone cartilage बनी पारिबनी किंतु कार्टिलेज को तमे बोन रे कन्वर्ट कर पारियो तो एडा तला तांकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंस जदि देखियो बोन रो फंक्शन कोन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूची कार्टिलेज रो फंक्शन कोन lubrication allow joint movement flexibility एग्जांपल बोन होची तमरा फीमर एटसेट्रा कार्टिलेज कोटी कोटी मेले तमरा नेज नोज टिप nasal septum next comment on the gametic exchange of earthworm during mating earthworm रो gametic exchange केमती हुए एटा तमरा गुटे earthworm एटा तारा head आ गुटे earthworm आसीबो उल्टा डायरेक्शन रे एटा होची तारा head तो जो तमरा earthworm अछि फर्स्ट वाला फर्स्ट सबुजा को earthworm रे सेवेंथ एट्थ नाइन्थ यांकर सेप्टम मझी रे तमर था स्पर्म थीका माने पाउच टू स्टोर स्पर्म हैला को से आउ तापर तमरो एग्जैक्टली जदि तमे 14th सेगमेंट देखिबा
तो सेट्रे अच्छी तमरो फीमेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट रे तमरो दीटा को मेल जेनाइटल पोर अच्छी सिमिलरली तमरो ए अर्थवर्म रे भी अच्छी ହେଲା तो तमरो दीटा को अर्थवर्म कोन हबो उल्टा आसीबे निज निज पाखरे आउ मर जो मेल जेनाइटल पोर रो तमरो स्पर्म आसी ए जो स्पर्म थिका अछि या भीतर डिपॉजिट हे जिबा सिमिलरली एठु भी हैला स्पर्म आसी तमरो एठरे डिपॉजिट हे जिबा तापरे तमरो फीमेल जेनिटल पोर 14 सेगमेंट माने क्लाइटेलम ऊपर अछि तो क्लाइटेलम ऊपर गोटे लेयर बना जिबा आउ से लेयर भीतर तमरो रहइबो एग जोटा कि 14 सेग माने फीमेल जेनिटल पोर बाहरी के आसीबो तमरो कोन एग तापरे अर्थ फॉर्म पछको जिबो हैला अर्थ फॉर्म जिबो पछको ए अर्थ फॉर्म जिबो पछको तो ए जो बैग टा स्लाइड है कि कोठी पड़े आसीबो टुवर्ड्स द स्पर्म थिका आउ स्पर्म थिकारू तमरा स्पर्म रिलीज हे जिवो ए बैग भीतर आउ एग सहित फर्टिलाइज तापर ए बैग टा पूरा बाहर छि बाहर को डिपॉजिट हे जिवो हला आउ ता भीतर तमरा स्पर्म आउ एग फर्टिलाइज हेकरी कोकोन तमरा लार्वा स्टेज फॉर्म करबा आरंभ कर हला तो एडला तमरा अर्थ तमरा मेटिंग नेक्स्ट in the digestive system of cockroach तो एनसीईआरटी रो डायग्राम यदि हमें बना को ट्रैक करिबा तो तो एटा हमर डायग्राम से लेबल कर दो छोट तरह जो ग्रीन रे मु करचेट तार सलाइवरी ग्लैंड एटा होची तार हेपाटिक सिका malphizian tubules foregut midgut hindgut foregut ro parts buccal cavity esophagus crop gizzard तापर आसला तमरो midgut midgut रे malphizian tubule आसीबो लास्ट पार्ट को कहंती इलियम
ହାଇଣ୍ଡ ଗଟ୍ ରେ ତମର କୋଲନ୍ ଆଉ ରେକ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ତମର ହେଲା। ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ତମର ବକେଲ କ୍ୟାଭିଟି ରେ ଫୁଡ ଯିବ, ସାଲାଇଭାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ ସାଲାଇଭା ଆସିବ, ସାଲାଇଭା ଫୁଡ କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେଇଠୁ ଇସୋଫେଗସ୍ ଥ୍ରୁ ରେ ସେ ଯିବ କ୍ରପ୍ ପାଥ। କ୍ରପ୍ ରେ ତମର ଯୋଉ ହେପାଟିକ୍ ସିକା ଅଛି ସେଇଠୁ ତମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଜୁସ୍ ଆସିବ, କ୍ରପ୍ ରେ ଫୁଡ ଟା ଆହୁରି ରହିକି ଡାଇଜେଷ୍ଟ। ଗିଜାର୍ଡ ରେ ପୁଣି ତମର ଫୁଡ କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାଗଲା ପରେ ତମର ମିଡଗଟ୍ କୁ ଯିବ ଫୁଡ, ମିଡଗଟ୍ ରେ ଫୁଡ ଆବଜର୍ପସନ ହେବ, ମାଲଫିଜିୟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୟୁଲ୍ସ ଯୋଉ ମାନେ ମିଡଗଟ୍ ରେ ଯେତେ ଆବଜର୍ପସନ ହେବାର ଅଛି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ପାଇଁ ସେ ଯିବ ହାଇଣ୍ଡ ଗଟ୍ କୁ। ହାଇଣ୍ଡ ଗଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଲଫିଜିୟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ୟୁଲ୍ସ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ୱେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ତମର ନର୍ମାଲ ୱେଷ୍ଟ କୋଲନ ଆଉ ରେକ୍ଟମ୍ ପାସ୍ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବେସିକ ଆଇଡିଆ ହେଲା। Next, draw a neat and well labeled diagram of a male reproductive system of frog. तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को बनाया एग्जिट किडनी बनाया तो किडनी ऊपर तमर अछि टेस्टिस है ना। टेस्टिस रू ट्यूब्यूल्स आसीकी तमर क्लोएका पाखरे जाउची, लास्ट रे इवन क्लोएका रे तमर यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होची, तो मो लेबल करबी होची तमर टेस्टिस वासा डिफरेंशिया टेस्टिस रो जस्ट ऊपर है तमर ठीक है फैट बॉडी है तापरे ये पार्ट को तमे कहबो यूरोजेनाइटल डक्ट, ता ऊपर टिके अछि सेमाइनल वेसिकल, ब्लैक पोर्शन होची किडनी हैला। एटा होची तमरो क्लोएका, क्लोएका ऊपर अछि तमरो रेक्टम, एटा होची यूरिनरी ब्लैडर। तो बस एटा होची तमरो फ्रॉग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस किडनी ऊपर अछि, किडनी रो जो यूरेटर ता बाहरुची से यूरेटर को यूरोजेनाइटल डक्ट कहन हैला। तो टेस्टिस कोन करबा तारो स्पर्म सब बंडल से यूरोजेनाइटल डक्ट रे पके दो, से यूरोजेनाइटल डक्ट से पळेबो तमरो क्लोएका रे, क्लोएका रे तमरो रेक्टम रो आसीबो तमरो एक्सक्रीटा, यूरिनरी ब्लैडर रो आसीबो यूरिन, और एठो तमरो आसीबो स्पर्म। तो सब जाक मिसी की क्लोएका रो बाहर को पळेबे, सिंगल ओपनिंग अछि हैला। तो ठीक अछि, एटा तला तमरो फ्रॉग रो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो हमें सब को सॉरी किछि लॉन्ग आंसर हमर सॉरी वाला शॉर्ट आंसर भी सॉरी जाइछि, आउ वेरी शॉर्ट आंसर ऑन सीक्यू भी हमर कंप्लीट। तो हमारा एग्जाम्पलर चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इज कंप्लीट। ठीक अछि, थैंक यू वेरी मच।